And from CK Birla, first we welcome you to this good afternoon. We are here because of Mr. Macalio and Mrs. TK. CK Birla is aiming, it's a state-of-art hospital working to provide world care facilities to all patients. It follows international and national guidelines and protocols. The aim is to provide the best healthcare facilities according to even guidelines of NICE and NHS system, which is followed in the UK. The hospital is running with a fantastic infrastructure and multifaceted doctors team, which we cannot work without a good critical care system and an anesthetic team. Dr. Gurpreet Singh Kohli is our anesthetist and critical care expert, director. Dr. Ashwini Maichan is the director in the orthopedics department. Mr. Macalio is our chief guest today, who's the patient who's operated. He's from Australia. He was about 175 kg on the day of his operation, 12 days back. And Mrs. TK, his wife, they are also here. We're very thankful that they've come all this way and stayed with us for this press conference today. The aim of the hospital is to use real-time communication skills to provide better accuracy and healthcare facilities. We have a care team-based approach to provide a dedicated team to support all the patients and give them better care. Dietitian team, physiotherapy team, the geriatric surgeons, the physicians, the anesthetists. You cannot work without all of these people. And the support system, the robust infrastructure provided by our fantastic team of anesthetists, especially Dr. Gurpreet Singh Kohli. I'd like to introduce him and allow him to take over. Dr. Gurpreet Singh Kohli. Who has talked about hospital, I just reiterate the whole thing. CK Birla Hospital, 1.5 साल हुआ है इसको खुले. In last 1.5 years, it has proved to be one of the a hospital which has got a superb infrastructure. It's a state-of-art hospital, not only in looks but also in providing the services. We have our operation theatres which are comparable, in fact better than the Western world, and I think our patients will vouch for it and they will be able to comment better on this. And we have the latest equipment and we deliver services for all type of surgeries. Talking about this case, you have seen Mr. Macalio. Mr. Macalio, he had problem in his spine, which was operated by Dr. Ashwini Maichan and his team. And for us, it was a big challenge taking up this case because there were many risk factors. Number one, the obesity he has. That is a major risk factor we face. Plus, all spine surgeries have a risk factor which we explain to the patient and the family and the wife that what complications can happen during and after the surgery. And keeping all these risk factors in mind, we went ahead with the surgery and everything went on smoothly. And he is walking today and without any problem. He is relieved of his pain. You can see a smile on his face. He went to sleep on OT table with smile on with this smile, and he came out of OT table with this smile on his face. Good luck, Mr. Macalio. You really did well, and he is going to have a very good life ahead. Now I hand over to Dr. Ashwini Maichan, who will be talking about the case, the surgical part, what exactly they did and how he has relieved the patient of this problem. लोगों को थैंक यू बोलना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है. सक्सेस इज समथिंग दैट यू बिकम द फेस कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया, बट इट इज टीम वर्क. Right, starting from the patient's perspective, that he came all the way, trusting our skills. He talked to us on phone, internet, email. हमारी बात होती रही इनसे और हमारी बात पे यकीन किया. एक ऐसे पेशेंट ने जिनसे हम कभी नहीं मिले. It is a big thing and it is an honor. Number one. Number two, my hospital has given me the infrastructure, the equipment, the technology with which I can take such challenging cases. I have my team, Dr. Kohli, Dr. Raju, and the team you can see here. They're all my team members. Without them, Govind, after please. These are the people who actually work day and night. इनके नाम मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ क्योंकि इनके बिना मेरे पास कुछ भी नहीं है. Mr. Khan, Sandeep, Dharmendra, Shaini and Govind. And this is only half the team. बाकी लोग अभी काम कर रहे हैं OT में.
इनके बिना मेरे पास एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। ए सर्जन इज लाइक एन आर्टिस्ट, उसको जितना बड़ा कैनवस आप देंगे वो उतनी बड़ी पिक्चर बना सकता है। एंड दैट कैनवस इज एनलार्ज्ड बाय दिस टीम, बाय द कॉन्फिडेंस दैट द हॉस्पिटल हैज शोन इन मी, कि उन्होंने मुझे ये पूरा डिपार्टमेंट का चार्ज दिया है। एंड दिस कैनवस कैन बी मेड बिगर बाय यू पीपल, जो इस कमरे से बाहर मेरी आवाज़ लेके जाएंगे कि हम ये काम कर रहे हैं। एंड विल बी एनकरेज्ड टू टेक मोर चैलेंजिंग केसेस लाइक दिस। तो इस केस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, थोड़ा सा बेसिक्स मैं पहले बताना चाहूँगा कि व्हाट इज सर्वाइकल स्पाइन स्टेनोसिस। आपने नाम सुन ही लिया होगा, अब तक पढ़ भी लिया होगा। व्हाट इज दिस डिजीज, सिम्टम्स before we go ahead with the technique. So I'll just come down there, I'll show you the models, how the disease presents, और ये किस तरह से एनाटॉमिकली हम इस डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं क्लिनिकली, के बारे में बताया जाता है। आइए आप लोग। तो सबसे पहले स्पाइन आप सबको पता ही है, रीढ़ की हड्डी है जिसको हम स्पाइन कहते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें जो नेक वाला पार्ट होता है उसको हम सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। जो पार्ट रिब केज के साथ होता है उसको डॉर्सल स्पाइन कहते हैं। उसके बाद जो कमर वाला हिस्सा होता है उसको हम लंबर स्पाइन कहते हैं। जो पेल्विस में आता है उसको सैक्रम कहते हैं, और जो टेल बोन होती है उसको कॉक्सिक्स कहते हैं। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। हमारे पेशेंट मैकेलियो को जो प्रॉब्लम था, दैट वाज इन एट द जंक्शन ऑफ सर्वाइकल एंड डॉर्सल स्पाइन। जहाँ नेक खत्म होती है और चेस्ट शुरू होती है, वो जंक्शन होता है जहाँ पर एक फिक्स पार्ट और एक मोबाइल पार्ट। नेक हमारा मोबाइल पार्ट है, चेस्ट फिक्स पार्ट है। और जब भी एक ऐसा जंक्शन होता है वहाँ पर डीजनरेशन होती है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनका वेट ज़्यादा है। तो दिस वाज द रीजन कि इनको ये प्रॉब्लम आई। अब स्टेनोसिस क्या होता है? दिस इज ए स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस स्पाइन। इसमें आप देखेंगे कि अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। जब हम स्पाइनल, आप शायद पीछे वाले लोग नहीं देख पा रहे हैं शायद जी, ये स्पाइन का एक छोटा सा सेक्शन है। स्पाइन के अंदर एक कैनाल होती है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, जो ब्रेन से लेकर हाथों और पैरों में पूरा सप्लाई करता है, राइट। उसका एक पर्टिकुलर फिक्स डायमीटर होता है उस कैनाल का, जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल करती है। डीजनरेशन की वजह से या ओल्ड एज में, ही जस्ट 33, इन पे अप्लाई नहीं होता है वो, ओल्ड एज में वो डायमीटर धीरे धीरे कम हो जाता है बिकॉज ऑफ डीजनरेशन, बिकॉज ऑफ द हाइपरट्रोफी ऑफ द बोन एंड द लिगामेंट्स। तो उससे हमारा जो सर्कुलेशन होता है ब्रेन से लेग्स में जो जाता है वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे, और पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। इसको कहते हैं स्टेनोसिस। स्टेनोसिस या तो सर्वाइकल स्पाइन में होता है या लंबर स्पाइन में होता है, दीज आर द टू एरियाज। जैसे ही पेशेंट को स्टेनोसिस होगा तो पेशेंट का जो सबसे पहला सिम्टम है वो होता है कि पेशेंट की जो चाल है वो अनस्टेडी हो जाएगी। पेशेंट को लगेगा कि मैं गिर जाऊंगा। अब यहाँ पे बात आती है डायग्नोसिस की। ऑस्ट्रेलिया में इनका सीटी स्कैन हुआ। मैं जो बातें बता रहा हूँ इससे मेट्रो प्राउड फॉर अस कि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज आर एडवांस्ड एंड दे आर रीचेबल फॉर एवरी पर्सन। पिछली बार भी हमने मीटिंग में बात की थी कि हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटी कॉमन मैन के लिए कितनी इजीली एक्सेसिबल है। इनका वहाँ सीटी स्कैन हुआ लंबर स्पाइन का, एमआरआई नहीं हुआ। वहाँ एमआरआई के लिए भी वेटिंग है। हमारे यहाँ पे एमआरआई 1 घंटे में करा सकते हैं। सीटी स्कैन हुआ और इनको बताया गया कि आपके लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम है, आपकी सर्जरी होगी लंबर स्पाइन की। जैसे ही पेशेंट आया, हमने एग्जामिन किया, आई फाउंड कि इनको लंबर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स गेट ए एमआरआई ऑफ होल स्पाइन। कंसीडरिंग हिज वेट, देयर वर ओनली 2 मशीन्स इन दिल्ली जिसमें इस वेट के पेशेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमने एमआरआई कराया एंड वी फाउंड आउट दैट लंबर स्पाइन इज नॉर्मल एंड देयर इज अ प्रॉब्लम इन सर्वाइकल स्पाइन। तो पहली जीत हमारी नहीं हुई कि हमने एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया। दैट वाज नंबर 1, थैंक्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम जिसने हमें इतना स्किल्ड बनाया है कि हम ये चीजें डायग्नोस कर पाते हैं। सेकंड चैलेंज, इनको ऑपरेट करना बिकॉज ऑफ हिज बॉडी वेट। एंड जहाँ जंक्शन होता है सर्वाइकल और डॉर्सल स्पाइन का, यहाँ पर स्पाइन का डायमीटर सबसे कम होता है, और अगर यहाँ ऑपरेट करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें सीधी सीधी कॉम्प्लिकेशन है दैट पेशेंट मे नॉट बी एबल टू वॉक अगेन, मे बी फॉर फ्यू मंथ्स, मे बी फॉर फ्यू ईयर्स। बाउल ब्लैडर का कंट्रोल चला जाता है। दिस वाज द बिगेस्ट रिस्क एंड बिकॉज ही हैज कम फ्रॉम अदर कंट्री, इनको वापस ट्रांसपोर्ट करना वुड हैव बीन अ ह्यूज चैलेंज। सो आई टॉक टू हिम and Mrs. TK that this is a probable complication. There are 50% chance that we might get a complication. But it was patient's trust in us, it was his willpower that he agreed that I want to go ahead.
because there is a waiting of 2 years in Australia for this surgery, and by the end of 2 years, I think the game will be lost. So it was a great decision on his part and a wise decision, I would say now, I can say. Next challenge, हमने 50% complication बोल तो दिया है patient को, but that doesn't mean कि मेरी responsibility as a surgeon कम हो गई है. उसके लिए हमें technology का सहारा लेना पड़ा. उसके लिए मेरे hospital ने मुझे support किया. मैंने बताया ना, surgeon is an artist. आप उसको कितना बड़ा canvas देंगे, वो उतनी अच्छी picture बनाएगा. तो my hospital is never behind. मैंने request किया that I need robotic facility and there is a special burr. आप इसे discount करें. This is a burr which इसके टिप के ऊपर डायमंड्स के छोटे-छोटे डायमंड्स लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं डायमंड टिप burr. तो आप देख ये burr आप you can just have a look. तो डायमंड टिप बर के बिना ये सर्जरी पॉसिबल नहीं थी. अब इस बर की हमें क्या जरूरत है? अब मैं आपको थोड़ा सा चीज बताता हूँ. नॉर्मली हम सर्जरीज हैंड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करते हैं. ये हमारे हैंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें ये आप देखेंगे सामने ये 1 मिलीमीटर की एक ब्लेड है. हर बार मुझे बोन को जब काटना होता है तो हर बार 1-1 मिलीमीटर करके हमें बोन को हटाना पड़ता है. बट 1 मिलीमीटर बोन हटाने के लिए मुझे 1 मिनट लगता है. एक बाइट लेते हैं, उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर दूसरी बाइट लेते हैं. दैट इंक्रीजेज माय ओटी टाइम, नंबर 1. नंबर 2, जब मैं मैनुअली काम करता हूं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. तो इसलिए हम बर से काम करते हैं. बर क्या करता है? धीरे धीरे बोन को पाउडर की तरह हटाती है, और जैसे ही बोन खत्म हो जाती है ये मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है. दिस इज ए डायमंड टिप बर. बहुत ही ये न्यूरोसर्जरी में यूज होती है वैसे, लेकिन हमने इस केस में स्पेशली इसको यूज किया है. और अपने रोबोटिक सॉफ्टवेयर से हमने 3D CT स्कैन से प्रॉपरली इसको मेजर किया कि कितने मिलीमीटर बोन हमारे पास है, हम कितना आगे जा सकते हैं, कहाँ पे हमें स्टॉप होना है. तो इस प्लानिंग से हमने रिस्क जो 50% था उसको और भी कम कर दिया. एंड लकीली एवरीथिंग वेंट वेरी वेल थैंक्स टू माय एनेस्थीसिया टीम. डॉक्टर पोपले हमारे साथ हैं, जिनकी टीम ने मेरा पूरा साथ दिया. इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये हाई रिस्क केस है, हम नहीं हैंडल कर सकते. तो यू सी मेरा जो स्पेक्ट्रम ऑफ वर्क है वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, ये इतने लोगों की इसमें मदद है और तभी हम ये काम कर पाए. आई थैंक एवरीवन हु वाज इन्वॉल्वड इन दिस केस, इन द प्लानिंग एंड आफ्टर केयर, एंड थैंक्स टू दिस कपल. मैम प्लीज, वी वांट अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड. She was so brave because you understand, अब रात को किसी को बताया जाए कि कल को he may not be able to walk, कितना बड़ा दिल चाहिए उसके लिए, और एक ऐसे प्रदेश में जहाँ है जिनको कोई जानता नहीं है. It was a big decision. Can you please say a few words? Well, on behalf of my husband, Mark Magalio, and myself, Taleo, we come all the way from Sydney, Australia. We would like to thank CK Berla Hospital, as well as Dr. Ashwani Mychand, Dr. Popley, as well as Dr. Kara for their work they've done for us. I must say the past 12 months has been very hard for us. In Sydney, Australia, Mark was suffering very bad back pain. We tried everything in Australia to help relieve this pain. I'd say he was on medications. He also tried chiropractor services and physiotherapy services. He still could not be fixed, and he was also bedridden. We have 3 children. They're waiting for us in Sydney, Australia, and we cannot wait to go back now and tell them all the good news that Dr. Ashwani and the team at CK Berla have helped us with. I just want to say, without these services that we have here at CK Berla, as well as our very experienced, very knowledgeable surgeon, Dr. Ashwani, we wouldn't have been able to give Mark's life back. We're very, very grateful. We understand that we're from a different country, and you know, Australia is a very advanced place. You'd think that they would fix him there, but not saying anything against them. Just wanted to say how advanced the technology here is in India, especially here in Delhi with this team. We've heard many comments from our family back in Australia saying how India is one of the most technically, medical advanced places in the world, and we just want everybody to know that don't be scared to travel abroad for surgery. Do your research.
Mark has been researching since August. It gave him hope, even though it was a big step for him to travel from Australia all the way to Delhi. He had hope and belief in Dr. Ashwani and the team with all the digital presence. Just wanted to thank you so much for everything you've done. Everything since we've landed here in Delhi, you've taken care of everything. CK Burla, all the staff has been so lovely to us. Everything we've done, any transfers from the hotel, even our hotel reservations, they've looked after us. They're also going to take us back to the airport tomorrow, which we're very thankful for, and yeah, just made everything a lot easier for us. Thank you. Thank you. Thank you. Like my wife said, yeah, it's been a life-changing experience coming here to India. For the last 12 to 18 months, I've pretty much had no life. I've been bedridden, unable to move around too much just from the back pain. And, did some research online and I stumbled across videos of Dr. Maichan and CK Burla Hospital. Yeah, looked into it and saw that it was a really good facility and the doctor, obviously Dr. Maichan is very experienced and very knowledgeable, like my wife said. So I took the gamble to come across and fly to India, and yeah, it's been a life-changing experience. Unable to walk without crutches, even with crutches, the pain is just too severe. And in the last 10 days, I've been able to walk up and down my lobby without crutches and walking outside as well. And, it was a very big risk to take, and I was informed by Dr. Maichan and the staff of CK Burla that there were a lot of risks involved with the surgery. And, I have a lot of faith in God, and I have a lot of trust and faith in the medical staff and in the medical facility here at CK Burla. And there was no other option. We were going to pursue with it, and whether it turned out good or it turned out bad, it was all in God's hands, and God will thankful to the man above that everything turned out well. As you can see, I'm able to stand up and be able to move around and stretch. So yeah, I have no complaints, but just a big thank you to the staff of CK Burla. Even the security guards outside, the kitchen lady, all the people within the facility. Everyone's been very, very kind and very, very welcoming. Obviously, as you can see, I'm a very big man, and they all made me feel very comfortable. When I was hungry, they would feed me. When I was thirsty, they would give me water. When I needed to walk, this doctor here really pulled through, and his team really helped me out. And I'm looking forward to, like my wife said, I'm looking forward to going home and enjoying my life with my 3 kids. I have 3 kids at home that I haven't been able to be a part of their lives for the last 12 months, and I'm looking forward to being a dad again. So thank you again to CK Burla and Dr. Ashwani Maichan, from the bottom of my heart, for my wife, my family, my children, my parents. Thank you guys so much for this wonderful experience and giving me my life back. I appreciate it, and I'm very thankful to you guys. So thank you, everyone.